गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इफेक्चुएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करते हुए जो है बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी इफेक्चुएशन मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक कॉन्टिन्यूइंग टास्क है, जो कि ड्यूटी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन से, गवर्नमेंट की स्कीम से या फिर सुपरविजन करते हुए हम जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या? ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं सिटीजन्स की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि उन्हें फॉलो करनी चाहिए। तो ये ऑफ कोर्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है, बट हाँ ये एक उनके ऊपर ड्यूटी ज़रूर लगाती है। तो आर्टिकल 51A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ड्यूटीज़ जो है वो बताता है कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिटीजन्स की, कि एक तो उन्हें अपना जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी अपहोल्ड करना है, ठीक है। तो ये ड्यूटीज़ जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं है, और इंडिया ने ये जो है ड्यूटीज़ यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो ये ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट जब इमरजेंसी पीरियड में स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई तो उन्होंने ये ड्यूटीज़ कुछ रिकमेंड की। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस समय पर इनकॉर्पोरेट की गई थी, और 2002 में फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें कि कहा गया कि पेरेंट्स या गार्डियंस जो हैं उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, वो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, ठीक है। तो कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। जैसे साल 2000 में एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में कहा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फिर एक जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में जो है कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स की जितनी ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो। फिर रामलीला मैदान जो इंसिडेंट हुआ था 2012 में, उसमें भी कहा गया कि फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की कि वो लॉफुल ऑर्डर्स को जो है वो माने और फुल कॉपरेशन करें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में, ठीक है। अब इफेक्चुएशन का मतलब है कि कैसे जो है हम एक्टिवली इम्प्लीमेंट करें इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो कैसे किया जा सकता है? अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है, एजुकेशन कैंपेन्स किए जा सकते हैं, स्कूल करिकुलम में से ऐड किया जा सकता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या पॉलिसीज़ जो है वो अगर इंसेंटिवाइज करें लोगों को कि वो ऑफ कोर्स इसको कंप्लाई करें। जुडिशली भी अपने टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशंस देकर कुछ जो है जजमेंट्स के थ्रू सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को री कर सकती है, ठीक है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी इफेक्चुएशन ऑफ ड्यूटीज़ के ऊपर जो बनाई गई थी, उन्होंने कुछ एक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे कि कुछ ऐसे लॉज हैं इंडिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करवा रहे हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि एक प्ली फाइल किया गया एक लॉयर द्वारा, जिसमें कहा गया कि अधेरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो उसको आप इन्फोर्स करवाओ। तो प्ली ने कहा कि नॉन अधेरेंस अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी की कर रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स उससे वायलेट हो रहे हैं या फिर उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। तो इसी ही कंटेक्स्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इसके जो है प्ली में रिप्लाई दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि एक कॉन्टिन्यूइंग टास्क है, गवर्नमेंट इस पर सब कुछ कर रही है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा हमें पता है कि नॉन जस्टिशिएबल है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पावर वैसे भी एग्जीक्यूटिव के पास ही है, वो कुछ लॉ बनाकर ही इसके ऊपर जो है वो इन्फोर्सेबिलिटी या फिर अवेयरनेस जनरेट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष्मान भारत। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने एक्सपेंशन कर दी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, और हेल्थ कवरेज अब सभी सीनियर सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव उनकी कितनी इनकम है, 70 साल से ऊपर के लोगों को जो है वो हेल्थ कवरेज दे दी है, 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली, ठीक है, पर ईयर। तो ये आयुष्मान भारत योजना जो है सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी को। तो स्कीम जो है वो 40% ऑफ पॉपुलेशन तो ऑलरेडी ही कवर कर रही थी, और जिसमें कि 10.74 करोड़ पुअर डिप्राइव्ड रूरल फैमिलीज़ थी जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा से। तो कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज देती है ये स्कीम, और हर एलिजिबल फैमिली को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कवरेज बेनिफिट पर ईयर दिया जाता है इसमें, जिसमें उनकी सर्जरी, मेडिकल, डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स कवर किए जाते हैं। अब जो यूनियन कैबिनेट ने एक्सपेंशन की है, तो इसमें 70 साल से अबव के सभी लोगों को, चाहे उनकी कितनी भी इनकम हो, उनको ये हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स दे दिए गए हैं। तो मतलब अब 6 करोड़ एल्डरली पीपल और जो है वो बेनिफिट लेंगे इससे, लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज़ को ये बेनिफिट मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन्स एज 70 और अबव जो हैं उनको
एडिशनल टॉपअप कवर मिलेगा 5 लाख पर ईयर का अपने लिए, जो ऑलरेडी भी जो इस स्कीम में जो जैसे जो पुअर थे, जो ऑलरेडी ही इसमें कवर्ड थे 70 साल से ऊपर में भी, उनको ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब 10 लाख के उनको टोटल कवर हो जाएगा। जो सीनियर सिटीजन जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जिनके पास है, या एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी एलिजिबल होंगे इस बेनिफिट को लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन मौसम। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है अपग्रेड करने को कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियाज़ वेदर डिपार्टमेंट, फॉरकास्टिंग करने के लिए, मॉडलिंग के लिए, डिसमिनेशन के लिए। तो मिशन मौसम का जो बजट है वो 2000 करोड़ रखा गया है ओवर 2 ईयर्स। ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा इंडिया की कैपेबिलिटी को इन वेदर और क्लाइमेट साइंस, रिसर्च और सर्विसेज में। तो इससे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए सिटीजन्स और लास्ट माइल यूज़र्स को एम्पावर किया जाएगा, ताकि वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को टैकल कर सकें, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को डील कर सकें। तो इंडिया की कैपेबिलिटी एटमॉस्फेरिक साइंसेज, वेदर मॉडलिंग चाहे हो, फॉरकास्टिंग हो, सर्वेलेंस हो, इसको इम्प्रूव किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। खासकर फोकस एरिया रहेगा इसमें मॉनसून फॉरकास्टिंग, ठीक है। फिर एयर क्वालिटी अलर्ट्स देना, टाइमली अलर्ट्स देना, साइक्लोन, फ्लड, अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, तो ये सब भी इसका इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा रहेंगे। तो क्या कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इसमें की जाएंगी? तो नेक्स्ट जनरेशन रडार्स लगाना हो, चाहे सैटेलाइट सिस्टम्स हों, सेंसर्स हों, ताकि रियल टाइम डेटा कैप्चर हो सके। फिर सुपर कंप्यूटर्स को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा सिस्टम में, ताकि वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अर्थ सिस्टम मॉडल्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो GIS बेस्ड ऑटोमेटिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का यूज़ करते हुए रियल टाइम डेटा डिसमिनेशन और अलर्ट्स भी भेजे जा सकते हैं। तो इससे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, डिफेंस हो, एविएशन हो, एनवायरनमेंट हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट हो, एनर्जी हो, सभी सेक्टर्स को इससे बेनिफिट होने वाला है। और कौन कौन सी इंप्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस होंगी इसमें? IMD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, NCM, RWF, ठीक है, इनकॉइस, फिर NCPOR, NIOT, ये सब जो है बॉडीज़ मिलकर इसमें काम करेंगी, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PM E-ड्राइव। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रमोशन के लिए जो है वो अप्रूव कर दी है। ये एग्जिस्टिंग फेम प्रोग्राम को रिप्लेस करेगी और 10,900 करोड़ का इसका बजट है ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इंडिया के जो पंचअमृत और लाइफ गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए ही 2020 में हमने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान निकाला था। उसके बाद फेम इंडिया स्कीम निकाली है 2015 से हमारी चल रही है, जो जिसमें सब्सिडीज़ दी जाती हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी को, और सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए सब्सिडीज़ जो है वो प्राइस पैरिटी लेकर आना चाहती हैं आपके जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल रन इंजन व्हीकल्स और जो है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स के बीच में, ठीक है, ताकि जो है बायर्स वो क्लीनर ऑप्शन को चूज़ करें। PLI स्कीम भी लाई गई है इसके लिए, ताकि जो है इसमें इन्वेस्टमेंट्स आएँ, फिर हमारी टेक्नोलॉजीज़ में और इम्प्रूव हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ताकि उसकी कॉस्ट हम कम कर सकें। फिर एडवांस केमिस्ट्री सेल्स बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए भी हम जो है उसके लिए भी PLI स्कीम लेकर आए हैं इंडिया में, ओके। तो इंडिया में अभी EV मार्केट की वैल्यू लगभग $2 बिलियन है, और कहा जा रहा है कि 2025 तक ये $7.1 बिलियन तक हो जाएगी, और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 10 मिलियन एनुअल सेल्स करेगी 2030 तक। तो 2 व्हीलर सबसे ज़्यादा इस डेवलपमेंट को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, जो कि क्योंकि वो 40 से 50% जितनी भी EVs अभी बिकती हैं इंडिया में वो 2 व्हीलर्स ही होते हैं। नंबर ऑफ़ पब्लिक चार्जर्स भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं इंडिया में, ठीक है। बट फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे पुअर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइयर कॉस्ट है आपके EVs की, बैटरी की लाइफ स्पैन की प्रॉब्लम है, टैलेंट गैप है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। तो अब PM E-ड्राइव स्कीम जो है अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बढ़ाने के लिए अपफ्रंट इंसेंटिव्स देगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन की उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो इस स्कीम के लिए 3679 करोड़ जो है वो दिए जा रहे हैं। 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक, चाहे इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज हों, ट्रक्स हों और अदर इमर्जिंग EV कैटेगरीज हों, उनको जो है वो इंसेंटिवाइज़ करने के लिए बायर्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उनको एक वाउचर दिया जाएगा अंडर द स्कीम, ताकि वो डिमांड इंसेंटिव्स जो है वो अवेल कर सकें, ठीक है। फिर
जो ई एम्बुलेंस है उसके लिए 500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्टेट की जो स्टेट्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज ला सकती हैं उसके लिए भी बजट ईयरमार्क किया गया है। ओके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 2000 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को भी जो है उसके लिए भी पैसा अलग से रखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्राम न्यायालय। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय अक्रॉस कंट्री जो है उससे एक्सेस टू जस्टिस इम्प्रूव होता है। तो ग्राम न्यायालय क्या है? विलेज कोर्ट्स हैं जिनको ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर बनाया गया है ताकि स्पीडी और इजी एक्सेस टू जस्टिस दिया जा सके रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया में। तो ये एक्ट अक्रॉस द कंट्री एप्लीकेबल है एक्सेप्ट नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, क्योंकि यहाँ पर कुछ 6 शेड्यूल एरियाज़ आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ग्राम न्यायालय जो हैं वो इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे रहे हैं लोगों को जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास अथॉरिटी होती है एक या एक से ज़्यादा ग्राम न्यायालय रखने सेटअप करने की आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट इन एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, या फिर ग्रुप ऑफ एडजेसेंट पंचायत पर भी इंटरमीडिएट लेवल पर या एक डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय जो है वो न्यायाधिकारी द्वारा प्रिजाइडेड होते हैं और उनके पास सेम पावर होती है, सेम सैलरी और बेनिफिट्स होते हैं जितने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास होते हैं। तो न्याय अधिकारी जो है वो पीरियडिकली विजिट करते हैं विलेजेस में और वो पार्टीज़ को भी हेयर करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं केसेस को अपने हेडक्वार्टर से भी बाहर जाकर। बेसिकली मोबाइल कोर्ट होते हैं। तो ग्राम न्यायालय जो है वो क्रिमिनल केसेस तक भी ट्राई करते हैं, सिविल सूट्स, क्लेम्स, डिस्प्यूट्स भी ट्राई करते हैं और इतना कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कि कंसिलिएशन जो है वो पार्टीज़ के बीच में कराई जाए जो है और उस पर्पस को सॉल्व किया जाए। अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है और उसके अगेंस्ट जो है वो पार्टीज़ जाना चाहती हैं तो उस क्रिमिनल केसेस में वो सेशंस कोर्ट में जा सकती हैं, सिविल मैटर्स में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोयूज स्पेसक्राफ्ट। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सोयूज स्पेसक्राफ्ट जिसमें कि 2 रशियंस थे, एक अमेरिकन है और वो ISS पहुंच गए हैं रिसेंटली। ठीक है, सिर्फ 3 घंटे में अपने लॉन्च के। तो सोयूज स्पेसक्राफ्ट एक रशियन स्पेसक्राफ्ट है, लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम है सोयूज प्रोग्राम रशिया का। तो रशियन क्रू मेंबर्स जो है उनको कॉस्मोनॉट्स कहते हैं, नासा के जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो सोयूज जो है वो कॉस्मोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स दोनों को ही ISS तक लेके जाने का एक जो है वो कैप्सूल है। तो सोयूज में 2-3 लोग जो है वो राइड कर सकते हैं। फूड, वाटर, बाकी के एसेंशियल सप्लाईज भी ISS में लेके जाते हैं ये। तो इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है जो कि एक लार्ज वैन की तरह होता है इसमें कि लिविंग क्वार्टर्स होते हैं कॉस्मोनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स के। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ये स्पेस स्टेशन के। फिर एक डिसेंट मॉड्यूल होता है जो कि यूटिलाइज़ किया जाता है क्रू द्वारा लॉन्च के फेज़ पर भी और रिटर्न जर्नी पर भी अर्थ के। थर्ड मॉड्यूल होता है जिसमें कि स्पेसक्राफ्ट के क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि बैटरी, सोलर पैनल, स्टीयरिंग इंजन्स एक्सेट्रा। तो सोयूज कैप्सूल जो है उसको प्रोपेल किया जाता है सोयूज रॉकेट द्वारा। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is effectuation of fundamental duties. This topic is important for your polity section. So Attorney General of India has addressed the Supreme Court regarding the effectuation of fundamental duties, and he has emphasized that it is a continuing task which requires duty-specific legislation, schemes and supervision. Okay. So what are fundamental duties? So these are the moral obligations which have been laid down into our constitution that every citizen is expected to follow. So these duties have been enshrined in Article 51A under Part 4A of the Constitution, and these duties emphasize the responsibility of citizens to uphold the spirit of the Constitution. And these duties are not legally enforceable, but they serve as guiding principle to foster a sense of civic responsibility. Okay. So the fundamental duties have been taken from the USSR Constitution. Okay, so the Indian Constitution at the time of its adoption, that is the original Constitution of India, did not have the fundamental duties, but they were incorporated during the emergency period when some Swaran Singh committee was appointed by the government to suggest constitutional amendments. Okay, so based on the recommendations of Swaran Singh committee,
10 fundamental duties to remind citizens of their moral responsibilities were incorporated into the Constitution. And the 11th one was added in 2002, which is the duty of parents or guardians to provide opportunities for education to their children. Okay, so as of now, we have 11 fundamental duties for Indian citizens. Supreme Court has also given certain judgments regarding fundamental duties. For example, the MC Mehta versus Kamalnath case, in which the court recognized the importance of protecting the environment as one of the fundamental duties and upheld the responsibility of citizens to contribute towards its preservation. Then there is important Javed versus State of Haryana case, in which the Supreme Court said that fundamental duties are just as important as fundamental rights and they must be honored for the progress of society. So in Ramlila Maidan incident versus Home Secretary case of 2012, the Supreme Court said that fundamental duty is there for citizens to obey lawful orders and extend full cooperation in maintaining public order and tranquility. Okay, so what is the effectuation of fundamental duties? So it is a process or measures which are taken to ensure that fundamental duties enshrined in the Constitution are actively implemented, observed, and followed by citizens. So what are the ways to effectuate these duties? So awareness generation or education campaigns, including these duties in the school curriculum, government initiatives or policies encouraging compliance, and sometimes even judicial interpretation is also made to reinforce civic responsibility. So Justice Verma Committee for Effectuation of Duties identified certain laws which are effectuating the fundamental duties in India, like the Prevention of Insults to National Honors Act, Protection of Civil Rights Act. Then there is Representation of People Act, Wildlife Protection Act, and Forest Conservation Act. So what was the recent case? So there, the top court was hearing a plea which was filed by a lawyer, which sought direction to the center for enacting well-defined laws or rules so as to ensure adherence to the fundamental duties as enshrined in the Constitution. So the plea also stressed that non-adherence to fundamental duties impact fundamental rights under Article 14, 19, and 21, and called for the creation of schemes incentivizing citizens to follow these duties. Okay, so it also sought guidelines from the center and states to raise public awareness and encourage compliance with these duties. So Attorney General of India, while replying to this plea, emphasized that the effectuation of the fundamental duties is a continuing task and it requires duty specific legislation, schemes, and supervision by the executive. And he has pointed out that fundamental duties, as we all know, they are non-justiciable and their implementation lies primarily with the executive decisions. Okay. So the next topic is Ayushman Bharat. This topic is important for your governance topic. So Union Cabinet has cleared the expansion of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to provide health coverage to all senior citizens aged 70 years and above, irrespective of their income. So Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was launched in September 2018, and the scheme is aimed to offer secondary and tertiary care services to the vulnerable population in the society. This scheme is aimed to offer medical coverage of 5 lakh rupees per family per year, and this scheme covers about 40% of the population targeted towards poorest and the vulnerable among our society. So this scheme is targeted to cover 10.74 crore poor, deprived rural families, and identified occupational category of urban workers families. And these beneficiaries have been identified by the latest socioeconomic caste census data. Okay, so what are the benefits which are given under the scheme? So of course, cashless access to healthcare services are given to the beneficiary at point of service, that is the hospital. Under the scheme, every eligible family is given 5 lakh insurance coverage benefit per year, and this benefit covers surgery, medical, daycare, treatments, cost of medicine, and diagnostics as well. Okay, so now the Union Cabinet has expanded this to provide health coverage to people aged 70 years and above, regardless of their income level, public health care. And this expansion is expected to benefit an additional 6 crore elderly people from 4.5 crore families, and senior citizens aged 70 and above who were already part of this Ayushman Bharat scheme will now get an additional top-up cover of 5 lakh rupees per year for themselves. Senior citizens who are under already private health insurance policies or employee state insurance scheme, they will also be eligible to avail the benefits of this scheme. Okay. So the next topic is Mission Mausam. This topic is important for your
Science and Tech section, and also your governance section. So Union Cabinet has approved a mission to upgrade the capabilities of India's weather department in forecasting, modeling and dissemination. And Mission Mausam will have a budget of 2000 crore rupees for the first 2 years of its implementation. And the aim is to revolutionize India's capabilities in weather and climate science, research and services. So what are the key objectives of this mission? So the aim is to utilize advanced technologies. Mission Mosam will equip various stakeholders, including citizens and last mile users, to better tackle climate, extreme weather events, and impacts of climate change. So, through research and development, the mission will also strengthen India's capability in atmospheric sciences, including weather modeling, forecasting, and surveillance. So, Mission Mosam will focus on several critical areas which impact India's economy and public safety, like enhanced predictions for the monsoon season, providing accurate air quality forecast to help manage pollution, timely alert for cyclones, floods, and other extreme weather events. Okay, so what are the technological advancements which will be utilized by this mission? So of course, this will deploy next generation radars, satellite systems, sensors to capture real-time data. Supercomputers will also be integrated into the system to process vast amount of data efficiently. So artificial intelligence and machine learning technologies will also be used to predict weather patterns and with higher precision. So these systems will provide real-time data dissemination and alerts. So there are several sectors which will benefit out of this mission Mosam, like agriculture sector, disaster management, defense and aviation, environment and health, transport and energy. Okay, so which will be the implementing institutions? The Indian Meteorological Department, Indian Institute of Tropical Meteorology, National Center for Medium Range Weather Forecasting, then the Indian National Center for Ocean Information Services, National Center for Polar and Ocean Research, and National Institute of Ocean Technology. Okay. So the next topic is PM E-Drive. This topic is important for your uh, economy and your governance topic. So Union Cabinet has approved the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement Scheme for promotion of electric mobility in the country. And now this scheme will replace the existing FAME program, and it will have an outlay of 10,900 crore rupees over a period of 2 years. So electric vehicles can help India achieve its Panchamrit and life goals by reducing emissions, improving energy security, etc. And for that, the government of India has taken several steps, like the National Electric Mobility Mission Plan was launched in 2020. Then the most famous one was the Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles India scheme, that is the FAME scheme, which is being implemented in India since 2015, under which subsidies are being given to promote manufacturing of electric and hybrid vehicle technology and to ensure sustainable growth of the same. Subsidies are also meant to bring a price parity between vehicles which have electric motors and those which run on fossil fuel engines. So PLI schemes for both the automotive sectors so as to promote domestic manufacturing of advanced automotive technology products, and also PLI scheme for advanced chemistry cell battery storage system so as to enhance the capabilities of the manufacturing of ACC technologies in India have been launched by the government. So the value of Indian EV market in 2023 was about $2 billion, and the projection by 2025 is about $7.1 billion, with domestic market achieving 10 million annual sales by 2030. So over the past 2 years, number of public chargers have skyrocketed from a modest 1,800 to an impressive 16,000 plus. So, but there are several challenges as well, like poor charging infrastructure, high cost of the electric vehicles, battery lifespan, talent gap, lack of standardization of charging infrastructure and technology, and even regulatory challenges. Okay, so now the PM E-Drive scheme will accelerate the adoption of electric vehicles in India by offering upfront incentives, and it will reduce the environmental impact of transportation and improve air quality as well. So the scheme has allocated 3,600 plus crore rupees to incentivize the purchase of electric two vehicles, three wheelers, electric ambulances, trucks, and other emerging EV categories. So buyers of electric vehicles will also be issued an e-voucher under the scheme to avail demand incentives. So a budget of 500 crore has been allocated to deploy electric ambulances as well. So 4391 crore rupees has been earmarked for the procurement of 14,000 plus e-buses by state transportation undertakings and public transport agencies. Okay. So 2,000 crore have been allocated to
for installing the public charging stations. An additional 780 crore rupees has been approved to modernize the testing facilities to ensure that they are equipped to handle new and emerging green mobility technologies. Okay. So the next topic is Gram Nyayalayas. This topic is important for your polity section. So the Supreme Court has recently said that the establishment of Gram Nyayalayas across the country would help improve access to justice. So Gram Nyayalayas or village courts are established under the Gram Nyayalaya Act 2008 for speedy and easy access to the justice system in the rural areas of country. So the act extends to whole of India except to the states of Nagaland, Arunachal Pradesh and Sikkim. So Gram Nyayalayas are aimed to provide inexpensive justice to people living in rural areas at their doorsteps. So state governments have the power to set up one or more nyayalayas after consultation with the respective high court in every panchayat at the intermediate level or group of adjacent panchayats at the intermediate level of a district. So Gram Nyayalayas are presided by Nyayadhikari, which is of course appointed by the state government in consultation with the High Court, and he or she will have the power, salary and benefits as a judicial magistrate of first class. So Nyayadhikari shall periodically visit villages and may hear the parties and dispose of the cases at a place other than its headquarters. So basically it is acting as a mobile court here. So Gram Nyayalayas will try criminal cases, civil suits, claims, disputes which are specified in the first schedule and second schedule to this act. So disputes are to be settled as far as possible by bringing about conciliation between the parties, and for this purpose the Gram Nyayalayas will make use of the conciliators to be appointed for this purpose. Okay. In case the parties are not satisfied with the resolution provided by the Gram Nyayalayas, for criminal matters they can approach the Sessions Court, and for civil matters they can approach the District Court. Okay. So the next topic is Soyuz spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So a Soyuz spacecraft, which is carrying 2 Russians and an American, docked at the International Space Station recently. So Soyuz is a Russian spacecraft, and a Soyuz program is the longest operational human spacecraft program in the history of space exploration. So Soyuz Russian crew members are called cosmonauts. NASA crew members are called the astronauts, and Soyuz takes cosmonauts and astronauts to and from the International Space Station. A Soyuz has room for 3 people to ride in it, and spacecraft also brings food, water and other essential supplies to the ISS. So this Soyuz spacecraft consists of 3 distinct modules, each serving a specific purpose. Like the orbital module is comparable to a van, and it provides living quarters to the crew during their time in the orbit, and they can connect directly to the space station. Then there is a descent module, which is utilized by the crew during the launch phase and return journey to the Earth. And then there is the third module, which houses the spacecraft's critical life support systems like the battery, solar panel, steering engine, etc. Okay, so Soyuz capsule is propelled into space by a Soyuz rocket. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.